Hello students, I hope you are well. Dear students, we have started the concept domain and range in the chapter relation and function. Now today we will discuss algebra of real function. Today we will discuss algebra of real function in which addition of two function, subtraction, multiplication and division. Now if we have one function fx and another function gx, we have two function fx and gx where mapping of f is, we suppose, A to R and mapping of G is B to R. Okay, mapping of F is A to R, mapping of G is B to R. Either you can take x भी ले सकते हैं, x to R, G is also x to R. You know when x is domain, here also domain. Okay, or in both the case x is proper subset of real. X is proper subset of real. Then we need to find f plus g. Okay, so f plus g का भी क्या होगा डोमेन, x to real, and f plus gx is equal to fx plus gx. fx plus gx. डियर स्टूडेंट, फिर आप सोचेंगे चेंजेस क्या है. यू शुड कीप इन माइंड mapping of f is x to r, mapping of g is also x to r, and x is proper subset of real, here also proper subset of real. So domain of f plus g is also x to real. But you should keep in mind ये जो x है means जो domain है, डोमेन किसका डोमेन, f प्लस जी. तो डियर स्टूडेंट, डोमेन ऑफ f प्लस जी जो होगा वो क्या होगा, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g. ओके, जो हमारे टू फंक्शन का एडिशन है वो कब डिफाइंड होगा और कौन सी डोमेन पे होगा, ये f और g की डोमेन के इंटरसेक्शन पे होगा. क्लियर. नाउ सी अगेन, वी हैव टू फंक्शन fx एंड gx और हम उनका एडिशन निकाल रहे हैं, वेयर यू कैन टेक a to r एंड g is also b to r. तो f प्लस जी आपका कब डिफाइंड होगा, f प्लस जी ये डिफाइंड होगा उस डोमेन पे होगा जो और a एंड b के इंटरसेक्शन पे होगा. सपोज इट इज c. ओके, a और b का जो इंटरसेक्शन है उसको हमने नेम दिया c. सो डोमेन ऑफ f प्लस जी इज c to r. क्लियर. और फॉर f प्लस g इंटू x we can write fx plus gx. अब हमने एडिशन का डिस्कस किया तो सेम सब्ट्रैक्शन. इफ वी नीड f माइनस gx तब क्या लेंगे आप, fx माइनस gx. इफ f into gx, so it is fx into gx, और f अपॉन g इंटू एक्स.
is fx upon gx, but gx should not 0. Clear? So in algebra of real function you can add two functions, subtract, multiply or divide, but you should keep in mind ये जब भी पॉसिबल होगा अगर वो दोनों फंक्शन की डोमेन का इंटरसेक्शन डोमेन होगा. क्लियर? नाउ लेट अस सी सम. नाउ वी हैव एन एग्जांपल. fx is x square plus 2 and gx is 3x plus 1 and we need to find f plus g. First we will find domain of f and domain of g. You know domain of f. आप fx में देखिए क्या ये स्क्वायर रूट में है? नो. क्या ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की पोजीशन में है? नो. तो वी कैन पुट एवरी रियल. डोमेन इज रियल एंड रेंज इज, रेंज देखिए अगर आप 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 एंड अदरवाइज सभी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे. और यहाँ डोमेन ऑफ g इज ऑल्सो रियल, रेंज इज ऑल्सो रियल. क्लियर? रेंज इज ऑल्सो रियल. When we need to find f plus g, आप देखिए फंक्शन का डोमेन रियल है fx का, gx is also real. Okay, so we can add both the function because real intersection real is also real. Clear? So domain of f plus g क्या होगा? Real होगा. क्या होगा? Real. So find f plus g into x. That is fx plus gx. So what is fx? X square plus 2, 3x plus 1. So it is x square 3x plus 3. Okay. Now f minus gx, fx minus gx. Our fx is x square plus 2 minus gx. We get x square minus 3x plus 1. Same for multiply. F dot gx is fx dot gx. So now you will multiply x square plus 2, 3x plus 1. So we get 3x cube plus x square plus 6x plus 2. Okay. Same for divide. F by z. But in such case, when you will take f upon z, x means fx upon gx. So it is x square plus 2, 3x plus 1. यहाँ आपको डोमेन में देखना आप क्या पुट नहीं कर सकते? -1/3. Because when x is -1/3, then denominator क्या हो जाएगा? 0. Clear? तो in case of division, you can write f by z में आपका all real satisfy करेगा, but not -1/3. रेंज आपको चेक करना है क्या आएगा. क्लियर? तो इट इज द वे ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ two function. Now let us see next example. Now we have two function fx and gx and we need to find f plus g naught, f minus g2, f dot g1, f by z4. So now here domain of f is real, domain of g is also real, and real intersection real is real. Okay, so we will find f plus g into x is fx plus gx. So in the same way
f plus g into 0 is f0 plus g0. f0 plus g0. So what is f0? If fx is 2x minus 1, then f0 is 2 into 0 minus 1. So we get minus 1. And gx is x square, then g0 is 0 square is also 0. Now you can put here f0 is minus 1, f0 0, so we get f minus 1. Clear? In the same way you can find f minus g. f dot g देखिए, f dot g into 1 is f1 dot g1. f1 निकालना, 2 1s 2 minus 1. g1 is 1 square 1. Clear? Now f by g4. So it is f4 upon g4. If fx is 2x minus 1, then f4 is 7. And g4 is 4 square 16. So we get 7 by 16. Clear? Now some more example. Now we have two function fx is under the root x plus 2 and gx is under the root 4 minus x square. First we will find its domain. You know both function are in square root. So in case first x plus 2 greater than equal to 0, because you know under root में 0 हो सकता है और positive no negative. So x plus 2 is greater than equal to 0 and x is greater than minus 2. So our domain is minus 2 to infinity. And here gx is 4 minus x square. In the same way, 4 minus x square should be also greater than equal to 0. If we multiply by negative both sides, less than equal to 0, make its factor. Either देखिए 0 से लेस है, या तो x minus 2 0 से लेस होगा, then x plus 2 is greater than 0. Because 2 नंबर का मल्टीप्लाई 0 से लेस है, it means 1 is negative. दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो नेगेटिव कब होगा? इफ ये नेगेटिव हो तो ये क्या लेंगे? पॉजिटिव. तो x is less than 2, x is greater than minus 2. Means x is greater than equal to minus 2, less than equal to 2. So here our domain is minus 2 to 2. देखिए डोमेन ऑफ f आ गया minus 2 to infinity. डोमेन ऑफ g is minus 2 to 2. तो what is common? इंटरसेक्शन क्या है? डियर स्टूडेंट, अब आपको देखना है इंटरसेक्शन बिटवीन द डोमेन ऑफ f and g. So minus 2 to infinity intersection minus 2 to 2. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minus 1, minus 2, minus 3. Minus 2 to plus infinity. Or minus 2 to 2. What is intersection? Only this part. Clear? So domain of f plus g is minus 2 to 2, and range I will write as real. Clear? Now you can find out f plus g. So you know f plus g into x is fx plus gx. So under root x plus 2 plus 4 minus x square. ऐसी क्वेश्चन में, ऐसी प्रॉब्लम में आपको पहले ये चेक करना है भी दोनों फंक्शन की जो डोमेन होंगी वो इंडिविजुअल में तो सेटिस्फाई करेंगी,
बट जब एडिशन होगा तो कॉमन डोमेन आएगा, दोनों का कॉमन मीन इंटरसेक्शन। तो व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस पार्ट? -2 to 2. So our domain of combined function is -2 to 2. Same way you can find their subtraction, multiplication, division. Now f into f. Now second is f minus g into x. So it is fx minus gx. X plus 2 minus 4 minus x square. Third is f into gx, that is fx into gx. So you can multiply x plus 2 into 4 minus x square. Next is f upon g. So it is fx upon gx. So our fx is x plus 2, gx is 4 minus x square. डियर स्टूडेंट यहाँ ध्यान से देखना आप क्या आएगा। हेलो, यहाँ देखना आप, इसमें अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ये 0 बनेगा, -2 के केस में भी 0 बनेगा। सो डिनोमिनेटर 0 हमारा नहीं होना चाहिए। सो इस केस में जो डोमेन लिखेंगे आप वो -2 to 2 नहीं रहेगा, ओपन इंटरवल आ जाएगा, नॉट क्लोज। क्लियर? नाउ यू कैन फाइंड x plus 2 upon 4 minus x square. Next is f into f. So it is also fx into fx. fx को fx से मल्टीप्लाई करेंगे, x plus 2. Same for g into gx. So gx into gx and square root will cancel. Okay. Now next problem. Now in next problem is find the sum and difference of an identity function and modulus function. We have two function. First is an identity function and second is modulus function. Okay, and you know domain of identity is real, range is also real, domain of modulus is also real, and range is 0 to infinity. Range is 0 to infinity means both function have real domain. Okay, both have real domain, real intersection, real is real. So we can find f plus g into x. So that is fx plus gx. But यहाँ कुछ cases बनेंगे. You know if gx is modulus x, so when x is less than 0 it is negative and greater than equal to 0 it is positive. Clear? So when we will find its sum, f plus g into x. So when x is less than 0 negative x, greater than equal to 0 positive x. Clear? You know in both the case, now f plus gx, ये पोजीशन तो आ गया g का, और f में क्या ऐड करें ना आप x, यहाँ भी x, तो x minus x 0 and it is 2x. Okay, for difference f minus gx. तो for difference देखिए हमारे पास मॉडुलस x तो नेगेटिव है और पॉजिटिव। अब हम डिफरेंस ले रहे हैं f के साथ, तो x माइनस माइनस प्लस, सो वी गेट 2x and 0. Clear? It is the sum and difference of an identity function and modulus function. Now next example. Now we have discussed different examples
of last exercise from element 2.4. So dear students, you will revise whole chapter second. If you have any problem, you can ask me on WhatsApp. Stay home, stay safe. Thank you.